codes. Okay, these are the codes. For A it is 010, for B it is 01011. And if you see properly, you will come to know A is 010 and same 010 is also found in B. So I can comment, please pay attention to my words. I can say that A is prefix of B. A is prefix of B. A is prefix of B. Okay. So we have to understand there are two aspects of this. When I said A is prefix of B, it only means that in the code of B, you have the code of A. In the code of B, you have the code of A. So that is why A is said as the prefix of B. Now there is the different concept which is called as a prefix code. So for time being, you just try to understand these two aspects are totally different. They are totally different. Okay. Now when I'm talking about the prefix codes, so I need to know whether these two codes are prefix codes or not. And as far as prefix is concerned, one thing is clear that A is prefix of B. But till now, I do not know whether these two codes are prefix code or not. So these two aspects are different. We'll see with an example. Okay. Now, suppose I have been given three different codes, okay, for the same symbols. So I'm writing down symbols, then code 1, then code 2, then code 3. So for every symbol, their respective three different codes. For example, A1, A2, A3, and A4. So there are four symbols. As far as for code 1 is concerned, for A1 I have code as 0, for A2 is 0, then for A3 it is 0 0, and for A4 it is 1 1. It is 1 1. So I mean to say that for the different model, the coding is done as this. As per the model, the coding has been done in this manner. Then for the different model, the coding is done. For A1 it is suppose 0, A2 is equals to 1 0, A3 it is for 1 1 0, and for A4 it is 1 1 1. Now using some different model, the codes are formed for the respective symbols. For example, for A1 it is given as 0, for A2 it is given as 0 1, for A3 it is given as 0 1 1, and for A4 it is given as 0 1 1 1. And now they have asked me out of these three different codes, which are the prefix codes? Now I have to identify the prefix codes. Even in the last session, I have told you that all the prefix codes are UDC. You have to be very attentive. You have to be very sharp in listening whatever I'm saying. Okay, the sentence which I have made just now is that all the prefix codes are UDC. I can say in other words, if no prefix found, then it is not UDC. Okay, so I can say there is a test for UDC. The test for the UDC is that all the codes should be prefix code. Or I can say the test for the UDC is that if no prefix found, then it is UDC. We'll see what are these important things. Okay. Now if I talk about code 1, okay, you will able to understand 0 is also there in this A1 is the prefix for A2 because yahan pe bhi 0. Okay. For A1 and A3, you will also understand A1 is the prefix for A3. A2 is also prefix for A3. Okay. ये हो गया और कुछ prefix दिख रहा है नहीं. Second,
0 prefix nowhere. So A is not prefixed to any of these three codes. A1 is not prefixed to any of these three codes. Then come to 10. 10 is also not prefixed to any of the remaining three codes. What about 110? 110 is also not the prefix to any of the remaining three codes. Come to this now. Acha, 111 is left. 111 is also not the prefix to any of the remaining three codes. Okay. Come to this now. 0, here also 0. So yes, I can say A1 is the prefix of A2. Again, A1 is also the prefix of A3. A1 is also prefix of A4. This is A. Okay, A4. Then come to 01. 01 is also the prefix of A2, A3 and A4. Okay. Then 011. Yes, 011 is also the prefix of A4. That is 0111. So you have understood what do you mean by prefix. You have understood the meaning of prefix. Now, what do you mean by prefix code? Now I am making the statement for what do you mean by the prefix code, and I will write down on the board the definition of prefix code. Pay attention. If any code word is not prefix, if any code word is not prefix to any other code word, if any code word is not prefixed to any other code word, then it is said as prefix code. Then it is said as prefix code. Okay. Now as per the definition of prefix code, if any code word is not prefixed to any other code word, then it is said as prefix code. The sequence is said as a prefix code. Now out of these three codes, can you identify the prefix code? Any one of you? Code 3. Code 3. This Code last 2. one. Sir, 2, sir. Code 2, sir. Yes, it is code 2. It is not code 3. What is the definition of code prefix code? Prefix code बताता है कि if any code word 1, 2, 3, 4 ये चारों में से any code word which is not prefixed to any other code word, then it is said as a prefix code. Now the second sentence what I am saying is that you have identified the sequence. You have identified the code word. Sorry, prefix code. You have identified the prefix code. So column number 3rd, that is code 2, is called as a prefix code. Okay. Now my second sentence is all prefix codes are UDC. All prefix codes are UDC. Uniquely decodable codes. Or else, can I say if no prefix found, then it is a UDC? Yes. No prefix found? Yes. No prefix found? It is UDC. Yes. तो देखो प्रीफिक्स का मतलब अलग है और प्रीफिक्स कोड का मतलब अलग है. अगर मुझे प्रीफिक्स देखना है तो मुझे देखना पड़ता है. जैसे यहाँ पे 0 प्रीफिक्स है, A1 इज प्रीफिक्स ऑफ A2. यस, A1 इज प्रीफिक्स ऑफ A2. दैट इज राइट. यहाँ पे कोई भी किसका प्रीफिक्स नहीं है. लेकिन जब प्रीफिक्स कोड की मैं डिफिनेशन बताता हूँ तब मुझे देखना पड़ता है कि एनी कोड वर्ड इज नॉट प्रीफिक्स टू एनी अदर कोड वर्ड. तो सिर्फ यही है जिसमें नो कोड वर्ड इज द प्रीफिक्स टू एनी अदर कोड वर्ड इन द गिवन सीक्वेंस. ओके. सो एज फार एज प्रीफिक्स कोड इज कंसर्न, ये है प्रीफिक्स कोड. और प्रीफिक्स अगर आपको देखना है तो जैसे मैंने बताया था, ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई. इसका ये 0 यहाँ पे भी है, 01 अगर देखूंगा तो 01 यहाँ पे भी है, तो A2 A3 का प्रीफिक्स है. ओके. So do not be in the confusion state that what is the prefix code. Okay. और लास्ट वाला मैंने बताया था UDC. अगर मुझे उसके टेस्ट देखनी है, सेटिस्फाई होता है क्या, तो मुझे एक ही देखना पड़ेगा कि वो प्रीफिक्स कोड है क्या. और अगर वो प्रीफिक्स कोड है तो डेफिनेटली
वो यूडीसी है, वो यूडीसी को सेटिस्फाई करता है. तो विल चेक ना. ओके, वी विल चेक. जैसे ये अगर ये है सेटिस्फाई करता है, प्रीफिक्स कोड है, तो ये यूडीसी कोड है. दिस इज यूडीसी ऑल्सो. सो विल सी हाउ दैट इज. नाउ देयर इज अदर टेस्ट ऑल्सो. वी विल सी द अदर टेस्ट. ओके, हाउ डू यू सी दैट अदर टेस्ट? मैं यहाँ पे बनाता हूँ. दैट इज बाय यूजिंग द ट्री डायग्राम. दैट इज बाय यूजिंग द ट्री डायग्राम. सर हाँ सर, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो आपने एग्जाम्पल लिया था a इक्वल्स टू 0 1 0, b इक्वल हाँ 0 1 0 1 1, सर हाँ उसमें वो आपने हाँ वो प्रीफिक्स हाँ कोड लिया था. वो मुझे सिर्फ बताओ. वो सिर्फ मुझे बताओ. A1 क्या लिया था मैंने, बताओ. सर 0 1 0. और सर ए और बी लिया था ना मैंने. हाँ सर. और बी क्या लिया था? 0 1 0 1 1. पहली बात मुझे बताओ, प्रीफिक्स है क्या कोई किसका? हाँ सर. ए बी का प्रीफिक्स है. Yes, हाँ sir. सर. हाँ, Yes, sir. ए बी का प्रीफिक्स है. मुझे बताओ प्रीफिक्स कोड है क्या? नो सर, ये प्रीफिक्स कोड नहीं है. लेकिन ये सर प्रीफिक्स, हाँ हाँ, तो मुझे वही बताना है. जब मैं एग्जांपल ये बताऊंगा ना, तब मैं यही प्रॉब्लम पे आने वाला था. ठीक है ना. अभी ये प्रॉब्लम को साइड बाय फिलहाल साइड में रखते हम. ओके, लेकिन तो भी अगर आपको देखना है तो इवन ए इज द प्रीफिक्स ऑफ बी, बट आर दे प्रीफिक्स कोड? नो. प्रीफिक्स कोड है क्या वो? नो. ओके, they are not prefix code. If they are not prefix code, directly you can say they will not follow UDC. They will not follow UDC. मैंने जो आपको कल बताया था कि सिर्फ प्रीफिक्स क्या है, और आपको अभी वही उसमें चेंजेस करने हैं. ओके, तो इसके बाद में वही इस पे आने वाला था. ओके, तो अभी आपको जो मैंने स्टेटमेंट बनाया वो हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये प्रीफिक्स कोड नहीं है. अगर ये प्रीफिक्स कोड नहीं है तो ये यूडीसी को फॉलो नहीं करता है. यूडीसी को फॉलो नहीं करता है. तो आपको अभी कल मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है. सिर्फ ये मैंने बताया था कि ये प्रीफिक्स है, बट दे आर नॉट प्रीफिक्स कोड. एंड इफ दे आर नॉट प्रीफिक्स कोड, it is not, it is not the test, or it is not the UDC also. Okay, so all prefix codes are UDC, but they are not prefix codes, so they are not UDC. Okay, we are trying to understand with this concept. Now ये तो टेस्ट मैंने आपको डायरेक्टली बताया था. अभी दूसरा टेस्ट जो है, दूसरा जो टेस्ट है, that is by using the tree diagram. That is by using the tree diagram. Okay, now see how the tree diagram. First I will show for code 1. I will show for the code 1. The rule is that whenever you go to the left, already हमने Huffman coding में किया है, so this is not new. Whenever you go to the left, it is 0. Whenever you go to the right, it is 1. And start from the root. Start from the root. Go towards the leaf. And whenever you start from the root towards the leaf, you will encounter nodes. You will encounter nodes. I'm starting from the tree. Sorry, I'm starting from the root. ये root है, ये root है. Root से अभी मैं ये पहला code 1 कर रहा हूँ. It is 0. Go to the left. That is A1. That is A1. ये 0 है. Again go to the left. Okay, sorry. ये 0 A1. Yes. और एक 0 है, तो I can say A1, A2. यहाँ पे जगह नहीं तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ. A1, A2. Then 0 0 0 0. So it is A3. Then 1 1. तो 1 1 कहाँ पे आएगा? 1 and 1. 1 1. This is A4. Now to check the prefix code, mark my words. अभी मैं क्या बता रहा हूँ. प्रीफिक्स कोड्स के लिए मैंने बताया था, डेफिनेशन के हिसाब से मैंने काम किया था, आपको भी समझ में आया. अभी ट्री डायग्राम के हिसाब से हाउ डू चेक द प्रीफिक्स कोड, उसके लिए एक ही बात है, योर symbols should lie on the exterior nodes. Now here we have two types of nodes, interior nodes and exterior nodes. Interior nodes are the nodes which will have the further branches. For example, if this is a node, this is called as interior node because it has the further branch. It has the further branch. Then which are the external nodes? External nodes are this and this, which do not have further nodes. So which do not have further branch. Which do not have further branch. So as far as internal nodes are concerned, there are two. Internal nodes are 2 and external nodes are 2. So whenever you find symbols
on internal nodes, then then these codes are not prefix codes. But if you find symbols on the external nodes, then definitely those codes are prefix codes. Again, I'm repeating. If you find the symbols on the internal nodes, then those codes are not the prefix codes. And if you find all the symbols on the external nodes, then these codes are called as a prefix codes. Now here you can see A1 and A2 are on the internal nodes. Okay, and A3 and A4 are on the external nodes. तो ये चार सिंबल में से एक भी सिंबल अगर इंटरनल नोड्स में है तो ये प्रीफिक्स कोड नहीं है. So this is not prefix code. This is not prefix code. This is not prefix code. If you have understood, we'll go for the second code. We'll go for the second code. We'll go for the second code. अभी second code देखो क्या बोल रहा है. A1 go left 0. ये root है. This is root. Okay. And these now A1. So A1 is here. This is 0. Then 1 0 1 right 0 left. So this is 1 and this is 0. Here is a node that is A2. A2. Then 1 1 0 1 1 0. यहाँ पे you have A3. Then triple 1. So 1 1 and one more 1. So this is the A4. Can you see all the four symbols are on the external nodes? A1, A2, A3 and A4. They are all on the external nodes. So yes, so they are called as, these codes are called as prefix codes. As per the definition, I have told you how do you find the prefix codes. Now as per the tree diagram, you have also understood that as per the tree diagram, okay, it also satisfies the prefix codes. तो क्या satisfy करना चाहिए कि all the symbols should be on the external nodes only. External nodes में internal nodes यहाँ पे है, internal nodes यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई symbol है नहीं है. All पूरे के पूरे symbol बाहर external nodes पे. So they follow prefix code. They follow prefix code. Come to the last one now. Code 3. Now code 3. Code 3 देखो वही है. 0 go towards left 0 0 1 0. हाँ ये 0 हो गया ना, तो ये मेरा A1 है. बाद में 0 0 1 0 1 ये मेरा यहाँ पे है, that is A2. 0 1 1 0 1 1 तो ये मेरा है A3. 0 1 1 1 0 1 1 and 1. So this is my A4. See internal nodes में A2 है और A3 है, तो यहाँ पे prefix code satisfy नहीं होता है. This is not prefix code. This is not prefix code. Definition के हिसाब से भी satisfy हो गया और tree diagram के हिसाब से भी satisfy हुआ. Okay. So these, out of these three, this is the prefix code. This is the prefix code. And if you want to check, if you want to check as a homework, you see that these codes are also UDC. These codes are also UDC. You take any codes and you can just see it will be it can be decoded in only one way, and as it decodes it only one way, it is following the UDC. It is follows the UDC. So you can write down the note. All of you write down the note. You can just do this as a homework. Okay. मैंने आपको सिखाया कैसे करना है. You just write down the note. All prefix codes are UDC. All prefix codes are UDC. All of you please write down. All prefix codes are UDC. All prefix codes are UDC. Full stop. Continue further. If no prefix found, then it is UDC. पहला सेंटेंस सेकंड सेंटेंस का मीनिंग ही सेम है, लेकिन आपको समझने के लिए. ओके. पहला सेंटेंस सेकंड सेंटेंस बोथ आर सेम. If no prefix found, then it is UDC. If no prefix found, it is UDC.
Yes, this is all about the prefix code and the UDC now. Yes, any questions you have? सर हाँ, सर यहाँ पे A1 भी इंटरनल ही है ना, इंटरनल नोड ही है ना? कौन सा वाला? A1 हाँ, A1 यस इंटरनल ही है, ये इंटरनल है, यस, क्योंकि इसको ब्रांच मतलब है ना। एक्सटर्नल, मतलब कि सब नहीं जो एकदम एक्सटर्नल, लास्ट में हाँ आते हैं वो वाले। हाँ एकदम लास्ट में आता है, जिसको फिर से ब्रांच ही नहीं आता, या फिर मैं बोल सकता हूँ लीफ, लीफ, ये लीफ है। ओके आपका ट्री है, आप रूट से जा रहे हो, रूट के बाद ब्रांच आती है, नोड्स आते हैं जहाँ से ब्रांच निकलती है, ब्रांच के बाद और ऊपर जाते हो तो लीफ निकलती है। जो लीफ है वो एक्सटर्नल है, और जो ब्रांचेस के नोड्स है वो इंटरनल है। तो यहाँ पे लीफ नहीं है ना, उसके बाद तो एक ब्रांच है ना ऐसा, तो देयर इज अ ब्रांच, देयर इज अ ओके ब्रांच। सर। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ, एक मिनट बस। यस, हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना। A1 इज इंटरनल नोड बिकॉज उसको ब्रांच है। इज इट क्लियर? यस सर। यस, नाउ प्लीज राइट डाउन run length coding, run length coding, RLE, run length coding, RLE. This is simple. Okay, sometimes the question is asked on this also. Run length coding. Please write down. This is a data compression technique. Please write down. This is a data compression technique. इसका एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बताया कल. Okay, but then also I will just give you in the example. This is a data compression technique. Full stop. In this runs of data, in this runs of data, in these runs of data are stored as a single data value, are stored as a single data value, are stored as a single data value and count, single data value and count. आप लोगों को डेटा वैल्यू और काउंट को अंडरलाइन करना है, या फिर डेटा वैल्यू एंड काउंट को अंडरलाइन करो, rather than original run, rather than original run. Full stop. आप लिखो run, RUN. Run is a sequence of some symbol or data value. Run is a sequence of some symbol. बस इतना लिखो. Run is the sequence of some symbol. Run is the sequence of some symbol. अब एग्जाम्पल लिखो, नीचे एग्जाम्पल लिखो, राइट डाउन A. Now in RLE it can be written as run length encoding में और run length coding में RLC run length coding. कभी कभी RLE बोलते हैं run length encoding और RLC run length coding.
नाउ ए कैन बी रिटन एज ए कितने बार आया है, 4 बार। ए कितने बार आया है, 4 बार। और आपने अंडरलाइन किया था, डेटा वैल्यू एंड काउंट। सो ए इज डेटा वैल्यू, ए इज डेटा वैल्यू और symbol, data value और symbol। and what is 4? 4 is the count, वो कितने बार आया है, वो कितने बार आया है, that is the count। 4 is the count, 4 is the count। okay, now this is a small example to understand you what is RLE। अब मैं बड़े से एक बार बताता हूँ। suppose I have 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6। if this is a message, okay, अब इतना बड़ा मैसेज भेजने से अच्छा, if it is better that if I cut short this message by using the RLC coding, how come you have to represent just in the form of data value and count, data value with and is corresponding count, okay, data value or the symbol। now here you know that this is 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 4, this is 3, this is 6। so can I just write down as A8? okay, now to be more specific, kabhi it can also be written as A08, B04, C03, G, that is, yes, this is G03 and C06, एक्चुअली अभी ये टोटल कितने सिंबल्स है, 8 + 4 12, ये 3 है, 12 + 3 15, 15 + 6 21। तो ये पूरे टोटल कितने हैं, 21। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो कैन आई से 21 से लेके मैंने 12 तक लाया, 21 से लेके मैंने 12 तक लाया। so I have cut short from 21 to 12। okay, so instead of transmitting 21 bits, this is just an example, okay, this is just an example। इतना बड़ा भेजने से अच्छा अगर हम इतना भेजते हैं, okay, इसमें कैरेक्टर्स टोटल कितने हैं, 21, इसमें कैरेक्टर्स टोटल कितने हैं, 12। so it's better that we will send 12 characters। okay, तो सिर्फ मुझे यही भेजना पड़ेगा, okay। so you just write down the advantages, please write down the advantages, and there is one disadvantage of this also। first write down the advantage number 1, more efficient, it is obvious because we have reduced the number of characters from 21 to 12, so more efficient। number 2, lossless, obviously I am dealing with the text, so it is lossless, okay, so lossless comparison technique। number 3, encoding and decoding is easy, obviously it is encoding easy and decoding also easy। encoding and decoding is easy। and write down the disadvantages। disadvantage में हम एक ही लिखेंगे, sometimes the RLC output gives, more bits compared to original run। sometimes the RLC output gives more bits compared to original run। उसका क्या मतलब है, आप सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं। अभी मेरा ये अल्फाबेट 8 बार था, तो मैं इसको काम करता हूँ, इसको कट शॉर्ट करके सिर्फ 4 ही करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 4 बार हो गया, ठीक है। ये बी मेरा 4 था, तो इसको मैं 2 करता हूं,
तो ये मेरा 2 हो गया। जी मेरा जी मेरा एक ही रखता हूं, सो इट हैज बिकम ओनली 1। और सी मेरा सपोज 3 रखता हूं, तो ये हो गया 3। ओके, नाउ द RLC कोड विल बी A4 B2 G1 C3। आपका कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में कुछ फर्क हुआ है? वो 12 के 12 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 बार ही है। लेकिन इसका क्या है? इसका देखो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10। ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है। मैं कैरेक्टर्स कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनकोडिंग के बाद वो कम नहीं हुआ है, वो तो उल्टा 2 से बढ़ गया है, वो तो उल्टा 2 से बढ़ गया है। So such type of problems we can encounter in RLC. So there is only one advantage what you have written, that is sometimes the RLC output gives more bits compared to the original run, compared to the original run. Okay, compared to the original run. So it is better if the alphabets are repeated more times, तब वो फायदे का होता है। अदरवाइज अगर कम है तो RLC का आउटपुट मुझे इससे ज्यादा आएगा। इट माइट हैपन दैट उससे ज्यादा आएगा। 2 से भी ज्यादा हो गया तो थ्रूपुट का प्रॉब्लम होता है। ओके, so there is a chances of encountering such problem while using the RLC. Is it clear to everyone? Is it Yes, clear to sir. everyone? Yes. Yeah. Now this is all about the prefix code, UDC code, RLE. Okay, now we are moving to the important one in this module as far as 1.1 module is concerned, और जिस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, that is dictionary coding. Dictionary coding. So I want everyone to write down the heading now on the fresh page. Dictionary coding. Dictionary coding. ये सब डेटा कोडिंग, डेटा कंप्रेशन के मेथड्स है। ये जो कुछ पढ़ा रहा हूं मैं, ये ऑल आर एसोसिएटेड विद द डेटा कंप्रेशन. ओके, एंड मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं दैट इज डिक्शनरी कोडिंग, वो भी एसोसिएटेड विद द टेक्स्ट कंप्रेशन. डिक्शनरी कोडिंग, डिक्शनरी कोडिंग. ओके, so dictionary coding is the coding technique which is used when we have long sentences. When you have long sentences, okay, जहाँ पे कहीं पे long sentences या फिर phrases होते हैं, वहाँ पे dictionary coding use होती है. Okay, and mostly this dictionary coding, not mostly, this is actually the data compression method which is used for text. Which is used for text. So if I'm using this technique for the text, can I say this is the lossless compression method? Yes, because you know that under the lossless compression method, it is mostly dedicated with the text compression. Okay, जहाँ पे I cannot compromise with the loss of the data or some data getting lost. Okay, so text message is a lossless compression method, and under the lossless compression method dictionary coding is used. Okay, dictionary coding is used. Now dictionary coding, there are two types. In the dictionary coding there are two types. One type is called as a static dictionary coding, and the other one, जैसे यहाँ पे static है तो वहाँ पे आएगा dynamic. Dynamic dictionary coding, उसका दूसरा नाम है adaptive dictionary coding. Adaptive dictionary coding. Okay, so dictionary coding, there are two types: static dictionary coding and dynamic dictionary coding. Here something is static, here something is dynamic. यहाँ पे static क्या है? यहाँ पे dictionary static है. यहाँ पे dynamic क्या है? यहाँ पे dynamic है dictionary. तो वो dictionary क्या है? We will see. Okay, we will see with an example.
As far as static dictionary is concerned, you have only one type in this, that is diagram coding. Diagram coding. Diagram coding, or you can say diagram coder. Diagram coder. Diagram coder. In dynamic or adaptive dictionary coding, there are three types. There are three types. One is LZ 77, LZ 78, LZW, LZW. So we have to understand, we will be studying all this LZ 77, LZ 78, LZW. Okay. And we also have to study diagram coder. So static dictionary, please underline the static and underline the dynamic, so that you will be able to understand what is static and what is dynamic there. And dictionary coding, mostly we deal with for the text compression. Text compression, it is lossless. It is lossless. So these are the some important points you can write down. And or important है for long sentences and phrases. For long sentences and phrases. For long sentences and phrases. So we'll start with the first one, diagram coder. We'll start with the first one, diagram coder. So please write down the heading as diagram coder under the static DC. And we will try to understand with the example. We'll try to understand with the example. Shall I rub this part? Do you have any questions, any doubt, any query? Shall I rub this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. अभी मैं जब प्रॉब्लम लूंगा, एग्जांपल लूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि डिक्शनरी क्या होती है. ओके. और वो स्टैटिक डायनामिक क्यों बोलते हैं. अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक डिक्शनरी में आएगा, अगर डायनामिक है तो डायनामिक डिक्शनरी कोडिंग में जाएगा, या फिर एडेप्टिव डिक्शनरी कोडिंग में जाएगा. सो प्लीज राइट डाउन द प्रॉब्लम एज, आपने हेडिंग दिया डायग्राम कोडर अंडर द स्टैटिक डिक्शनरी कोडिंग. द प्रॉब्लम इज there is a sentence comprising of, there is a message comprising of these symbols A, B, C, D, R. There is a message comprising of these symbols. Okay. And in the problem, they have given the static dictionary. They have given the static dictionary. They have given the static dictionary. And the static dictionary में क्या है? Static dictionary में क्या है? Code versus entry. Code versus entry. Code versus entry. Static dictionary में क्या है? Code versus entry. Code versus entry. Code है 000. For this 000, entry is A. For code 001, entry is B. For code 010, entry is C. For code 011, entry is D. For code 100, entry is R. For code 101, entry is AB. For code 110, the entry is AC. For code 111, entry is AD. Now, whenever the dictionary is given and this is the dictionary which is static, that means you cannot change this dictionary. You cannot update this dictionary. You cannot append, or you cannot add or subtract something from the dictionary. That is why it is called as a static.
and we are understanding diagram coder. So diagram coder में you have a static dictionary. You have to use this dictionary as a reference for encoding the message. Static में dynamic में क्या होता है? Dictionary will be build up gradually. The dictionary will be built up gradually. Dictionary हम वहाँ पे update करते रहते हैं gradually. Okay? वहाँ पे dictionary बनाई जाती है gradually. As per the entry, codes are formed, or as per the codes, entries are entered. Okay? So that is why it is called as a dynamic. We can add gradually. That is why it is called as dynamic. Here we cannot add, we cannot subtract. That's why it is called as a static. That is the main difference between the two. Okay? और उसमें हम पढ़ेंगे LZ77, LZ78, LZW, और यहाँ पे हमको एक ही पढ़ना है, that is diagram coder. Okay? प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ. ये देने के बाद वो पूछते हैं encode the message, और मैसेज देखो क्या है, AB, RA, CA, DA, BRA. क्या है ये मैसेज? क्या है मैसेज? ये मैसेज को एनकोड करना है, और क्या दिख रहा है यहाँ पे? Abracadabra. यस, हाँ, बस सुनाई दिया. तो दिस abracadabra मोस्टली एग्जाम में abracadabra में ही पूछा जाता है. ओके, तो abracadabra I have to encode by using this static dictionary. So the procedure is that as far as diagram coder is concerned, we have to encode 2 bits at a time. Okay, तो कहीं पे लिख देना आपने in your diagram coder that 2 bits are encoded at a time. At a time, 2 bits are encoded at a time. Okay. Sir, See, I will. हाँ. सर ये रूल है 2 bits encoded at a Yes, time, या yes. क्वेश्चन में कंडीशन दिया है? नहीं. This is the rule as per the diagram encoder कि आपको हमेशा 2 कैरेक्टर्स ही साथ में लेने हैं. 2 bits बोलो या फिर कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स या 2 bits. 2 bits या 2 characters are encoded at a time. So that is a set rule. Okay. लेकिन कुछ उसमें चेंजेस है वो रूल में. वो कैसे चेंजेस है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन. We have to go from left towards the right, and you have to take all the time 2 bits or 2 characters at a time. First, I am taking first 2 characters. I am taking AB. Can you see the corresponding code for the entry AB? Yes. 101. 101. So please write down for AB 101. 101. Now take the next two. Please see the entry corresponding code for the entry RA. Can you see RA? No, I cannot No, see sir. RA because static dictionary में RA का एंट्री का corresponding code नहीं दिया है. तो हमको क्या करना है? हमको रुकना थोड़ी है, हमको और आगे बढ़ना है. तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? Then in that case, do not take RA together, split them into 2. Take first R and see the corresponding entry. जब कभी ऐसा होता है कि RA का एंट्री नहीं होता तो एक का तो एंट्री होता ही है. एक का तो भी एंट्री होता है. अगर एक का भी एंट्री नहीं होगा तो क्वेश्चन इज आस्क्ड रॉन्ग, या फिर स्टैटिक डिक्शनरी गलत है. डायरेक्ट वहां पे लिख देना तो क्वेश्चन इज रॉन्ग. ओके, सो फॉर R, what is the corresponding entry? R 100. Yes, so please write. Yes, so write down 100. मैं अल्टरनेट रेड और ब्लैक से लिखता हूँ. 100. अभी R का हो गया तो मैं अभी A को अलग से नहीं लूंगा. अभी A का मैं दूसरे के साथ पेयर करूंगा. आई विल मेक अ पेयर ऑफ A विथ C. ओके, तो A को अलग से नहीं लूंगा. अभी A का C के साथ पेयर करूंगा. A और C का पेयर करूंगा. कैन यू सी द एंट्री फॉर AC? यस, इट इज 110. सो इट इज 110.
So for AC, it is 110. Again, make the pair of AD. AD entry available? Yes, available. That is corresponding code is 110. So for AD, you can write down the corresponding code as 111. 111. Again, make the pair of AB. Make the pair of AB. The entry, do you have the entry for AB? Yes, it is available. It is 101. So it is 101. Then again, do we have RA entry? No, I do not have RA entry. So for R, write down the code as 100. And as after A, I do not have anything. For A, I will take the single entry as A, and for A it is 000. So your code is formed. So this is your code under the diagram coder. This is the code for under the diagram coder. This is the code for. This is an encoded message. This is an encoded message in encode, or this is a code word. This is a code word formed for abracadabra by using this static dictionary. So I am referring to static dictionary and using some guide, using some rules. The rule says that always take 2 bits at a time. But if I combine 2 bits at a time, and if I do not see the corresponding entry and the code for that particular entry, then I can split that pair into two different letters or symbols. Then for the first one, you please get the entry, and for the other one, you can make that letter pair with the other next letter, and this will continue, and this will continue. Okay, so this is the simple one. Static dictionary. The concept of the static dictionary is understood to you. Okay. Now in the next session, that is Monday. Okay, because tomorrow I do not have, tomorrow is holiday. So in the next session, I'll be talking about LZ77, LZ78, LZW. What is LZ? Why it is said as 77? We'll see everything in the next session. Okay. Yes. Do you have any questions? Any doubt in this? सर ये तो इनएफिशिएंट कोडिंग सिस्टम हो गया ना सर, लेकिन कैसे क्या? स्टैटिक डीसी कैसे क्या? सर ये जो कोडिंग सिस्टम है सर, ये थोड़ा इनएफिशिएंट है ना, लेकिन बिकॉज सर आउटपुट बिट्स तो ज्यादा है सर, आउटपुट बिट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट सर. That is true. But what about the security and all that? Because if I have to decode this, I have to send the same static dictionary to the receiver. Am I right? So as far as, yes, it is inefficient because the number of bits are more as compared with the original one. That is true. But what about the security, the data security and the integrity? Because I have to send this particular table, that is a static dictionary, along with this particular bits to whom? Towards the receiver. तो जिसको मुझे भेजना है उसी रिसीवर के पास ये टेबल जाएगा और ये एनकोडेड बिट्स जाएंगे, so that receiver will decode by using the static code, and he will get from this bit, he will get that this message, abracadabra. Okay, so there are some pros and cons for every method. There are pros and cons for every method. जैसे हम जब LZ सीखेंगे ना 77 से 78, 78 से W, then you will be able to understand what are the pros and cons, and what are the benefits of using the most efficient one. So as far as efficiency is concerned, yes, bits transmitted will be more, but the data secured will be, there is a data security by using the static dictionary. Okay. Yes sir. Okay. Yes, attendance ले लो. पहले D14A का Parmeshwari madam is there. Parmeshwari madam is there. Otherwise Manish. नाही सर. Manish घेऊन टाक. हो हो. आफ्टर D14 है D14B. अच्छा प्रियंका मैम ने ले लिया क्या D14B का?
मैम नहीं है। अच्छा ठीक है मनीष को लेने तो पहले फटाफट D14 A का, बाद में प्रणव या मुस्कान लेंगे D14 B का। यस मनीष गो, स्टार्ट द अटेंडेंस, टेक द Roll number अटेंडेंस। 1, One present. 2, 3, 3 present. 4, 4 present. 5, 5 present. 6, 6 present. 7, 7 present. 8, 8 present. 9, 9 present. 10, 10 present. 11, 11 present. 12, 12 present. 13, 13 present. 14 present, 15, 15 present. 16, 16 present. 17, 18, 18 present. 19, 19 present. 20, 20 present. 21, Present. 22, 22 present. 23, 23 present. 24, 24 present. 25, 26, 25, Present. 26, 26 present. 27, Present. 28, Present. 29, Present. 30, Present. 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34 present, 35, Present.